Hello everyone. In this video, students, we will discuss about differentiability. What is differentiability? Differentiability. Students, let a real function f(x) and c be any point in its domain. If students, the derivative of given function at point C is exist, then the given function is differentiable at point C. The derivative of given function at point C, limit x tends to c, fx minus fc upon x minus c equal to f dash c. तो यदि स्टूडेंट्स किसी भी फंक्शन का गिवन पॉइंट पर अगर डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है वो फंक्शन, तो वो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा, अदरवाइज डिफरेंशिएबल नहीं होगा. डेरिवेटिव एग्जिस्ट करने का मतलब इट मींस स्टूडेंट लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव. यानी किसी भी फंक्शन का उस पॉइंट पे डेरिवेटिव एग्जिस्ट करने का मतलब ये होता है कि उसका उस पॉइंट पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव बोथ आर क्या हो, इक्वल हो. ओके, तो व्हाट इज लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव? लिमिट x टेंड्स टू c माइनस, फ्रॉम डिफिनिशन f(x minus fc upon x minus c), and right hand derivative limit x tends to c to the power plus f(x minus fc upon x minus c. It is a left hand derivative and right hand derivative. ये दोनों अगर इक्वल होता है तब ये डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा, और अगर ये डेरिवेटिव एग्जिस्ट होता है तो फंक्शन हमारा क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा. इन फॉर्म ऑफ h स्टूडेंट्स, हियर पुट x इक्वल टू c minus h, in right hand side x equal to c plus h, where x tends to c, h tends to 0, and x tends to c, h tends to 0. That is equal to students, limit h tends to 0, f c minus h minus fc upon c minus h minus c, and that is equal to limit h tends to 0, fc plus h minus fc upon c plus h minus c. It is equal to limit h tends to 0, fc minus h minus fc upon c and c cancel minus h, and limit h tends to 0, fc plus h minus fc upon c and c cancel h. It is a in form of h. तो ये हम चेक करेंगे किसी भी गिवन फंक्शन का गिवन पॉइंट पे हम बोथ लिमिट्स को फाइंड आउट करेंगे. अगर वो इक्वल है तो हम कहेंगे कि ये फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है. ओके, अच्छा, व्हाट इज मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी, डिफरेंशिएशन? मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन, for this students, consider a function f(x). It is real function. Suppose graph of given function is this. Okay, ये गिवन फंक्शन का क्या हो गया, ग्राफ हो गया, x एक्सिस एंड और y एक्सिस. लेट p be a point at x equal to c. हम
x इक्वल टू सी पर एक पॉइंट ग्राफ पे कंसीडर कर ले रहे हैं। तो कोऑर्डिनेट ऑफ P x इक्वल टू सी एंड y इक्वल टू FC. It is a coordinate of P. Suppose a neighbor point A at distance x equal to c minus h. So therefore coordinate of A c minus h and f c minus h. Again consider a point B at point x equal to c plus h. The coordinate of B c plus h comma f c plus h. Coordinate हो गया. Now we will find slope of chord AP. Slope of chord AP. Slope of chord AP equal to m pm upon am. Perpendicular upon base. Perpendicular pm equal to ये डिस्टेंस माइनस ये डिस्टेंस. ये डिस्टेंस कितना है आपका FC माइनस ये डिस्टेंस कितना है FC माइनस H अपान AM के लिए हम यहां से ये डिस्टेंस C माइनस C माइनस H. C and C कैंसिल इक्वल टू माइनस कॉमन फ्रॉम न्यूमरेटर in bracket FC minus H minus FC upon minus minus plus, that is equal to FC minus H minus FC upon minus H equal to left hand limit. It is a left hand limit. Okay. Slope of chord PB. Slope chord PB equal to Bn upon Tn. Bn upon Tn equal to Bn equal to FC plus H minus FC upon C plus H minus C. C and C cancel. That is equal to FC plus H minus FC अपॉन H इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव. अब ये देखो दोनों जो स्लोप है पॉइंट P के लेफ्ट साइड का और राइट साइड का ये आपस में इक्वल है. अगर ये इक्वल है इसका मतलब इस P पॉइंट पे हम जो टेंजेंट ड्रा करेंगे उसका भी स्लोप इसी के इक्वल होगा. तो स्लोप ऑफ कार्ड AP एंड स्लोप ऑफ कार्ड PB इक्वल यदि होता है तो इस पॉइंट P पर ड्रा किए गए टेंजेंट का स्लोप भी इसी के इक्वल होगा. इट मींस स्टूडेंट्स वी कैन से दैट द डिफरेंशिएशन ऑफ ए फंक्शन इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट एट द पॉइंट P. ओके, वी कैन से दैट स्टूडेंट्स द differentiation of a function is a slope of tangent at point P. ओके, तो हम लोग जो डिफरेंशिएशन करते हैं किसी फंक्शन का वो क्या करता है किसी पॉइंट पर स्लोप को रिप्रेजेंट करता है. तो कोई भी अगर फंक्शन है और उसका हम ग्राफ अगर ड्रा कर लेते हैं तो उसके डिफरेंट पॉइंट पे उसका स्लोप क्या होगा डिफरेंट आएगा. क्योंकि फंक्शन इन फॉर्म ऑफ वेरिएबल x अगर गिवन है तो जब उसका हम डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो x की फॉर्म में आएगा और x के डिफरेंट वैल्यूज पर हमको क्या होगा डिफरेंट वैल्यूज मिलेगा.
तो वो क्या होगा, उन पॉइंट पे स्लोप को रिप्रेजेंट करेगा। तो डिफरेंशिएशन का मीनिंग क्या हुआ कि हम फंक्शन का उसके ग्राफ पे किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रा करते हैं और उसके स्लोप को फाइंड आउट करते हैं। तो इट इज ए जनरल कंसेप्ट ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी। डिफरेंशिएबिलिटी के केस को चेक करना हो तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव बोथ आर फाइंड करेंगे। अगर वो इक्वल है तो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा, अदरवाइज डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ओके, नाउ वी स्टडी थ्योरम। If a function is differentiable at any point, it is necessarily continuous at that point. In this theorem, students, ये बोला जा रहा है कि अगर कोई फंक्शन किसी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है तो वो उसको क्या होना चाहिए, उस पॉइंट पर कंटिन्यूअस भी होना चाहिए। ओके, इसे हम प्रूफ करेंगे। लेट f(x) be a function is differentiable at point C. Therefore, limit x tends to C, f(x) minus fc upon x minus c equal to f dash x. ओके, f dash c। हमने सपोज कर लिया कि f(x) ये फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट पॉइंट c। तो अगर ये डिफरेंशिएबल है तो ये क्या करेगा, डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा उस पॉइंट पर। नाउ स्टूडेंट्स, f(x) minus fc can be written as f(x) minus fc upon x minus c into x minus c। हमने क्या किया है, x minus c से मल्टीप्लाई भी किया है, x minus c से डिवाइड भी किया है। ओके, टेकिंग लिमिट ऑन बोथ साइड, taking limit on both side, we get limit x tends to c f(x) minus fc equal to limit x tends to c f(x) minus fc upon x minus c into limit into x minus c. Here apply the algebra of limits, that is equal to limit x tends to c f(x) minus limit x tends to c fc equal to limit x tends to c f(x) minus fc upon x minus c into limit x tends to c x minus c. Limit x tends to c f(x) minus that is equal to fc, क्योंकि fc है और c पुट करेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, fc इक्वल टू f dash c। ओके, f dash c, it is equal to f dash c into here put x equal to c minus c equal to 0. Okay, that is equal to limit x tends to c f(x) minus fc equal to 0. It can be written as limit x tends to c f(x) equal to fc. अब आप देखो गिवन फंक्शन का एट पॉइंट c पर जो लिमिट है उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू के क्या है, इक्वल है। तो देयरफॉर f(x) इज कंटिन्यूअस, f(x) इज कंटिन्यूअस। तो अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल था तो क्या आ गया, उस पॉइंट पर कंटिन्यूअस भी आ गया। बट कन्वर्स ऑफ थ्योरम may not
बी ट्रू। इस थ्योरम का जो कन्वर्स है ये कोई जरूरी नहीं है कि वो करेक्ट हो। जैसे अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो ये जरूरी नहीं है कि वो क्या हो, डिफरेंशिएबल हो, बट डिफरेंशिएबल फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा, यानी सारे डिफरेंशिएबल फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होंगे, लेकिन सारे कॉन्टिन्यूअस फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं हो सकते हैं। जैसे इसके लिए हम कंसीडर करते हैं, लेट एफ एक्स बी ए फंक्शन मॉड एक्स। ओके, तो मॉड एक्स we can draw the graph of mod x। ये ग्राफ हमको mod x का मिल गया। अब आप ये बताओ, ये कंटिन्यूअस फंक्शन तो है, बट एट पॉइंट O आप क्या करोगे, टेंजेंट ड्रा कर पाओगे पॉइंट O पर। तो हियर वी कैन नॉट ड्रा द tangent of the we cannot draw tangent at point O। okay, therefore function is not differentiable। अब इस पॉइंट पे हम जब टेंजेंट ड्रा नहीं कर सकते हैं तो फंक्शन क्या हो गया, डिफरेंशिएबल नहीं होगा, क्योंकि ग्राफ के हर एक पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं तभी वो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा, और यहाँ वो पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रा नहीं कर सकते हैं। तो जब टेंजेंट ड्रा नहीं होगा तो उसका स्लोप कहाँ फाइंड होगा, इसलिए डिफरेंशिएबल नहीं होगा। इसको मैथमेटिकली स्टूडेंट्स हम कैसे प्रूफ करेंगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू लिमिट x tends to c to the power minus c fx minus fc upon x minus c। In this question students, c equal to 0, that is equal to limit x tends to 0 to the power minus fx minus f0 upon x minus 0। x tends to 0 to the power minus, therefore x less than 0, x less than 0, fx equal to minus x। Here value of fx minus x and value of f0 equal to x equal to 0 means fx equal to x, so put x equal to 0, so it will equal to 0 or x minus 0 equal to limit x tends to 0 minus x upon x, x and x cancel, it will be equal to minus 1। Similarly right hand derivative equal to limit x tends to c to the power plus fx minus fc upon x minus c, put x c equal to 0, therefore limit x tends to 0 fx minus f0 upon x minus 0। x greater than 0, x greater than 0 means fx equal to x, so therefore that is equal to limit x tends to 0 x minus f0 equal to 0 upon x equal to 1। Here left hand derivative not equal to right hand derivative, so therefore the given function mod x is not differentiable at point x equal to 0। So therefore the theorem, the converse of theorem may not be true। okay, find left hand and right hand derivative of the function fx at point x equal to, hence so that f is not derivable at x equal to 2। in this question students, हमें left hand derivative and right hand derivative को फाइंड करना है, और उसके बेस पे हमें ये बताना है कि ये फंक्शन x इक्वल टू 2 पर डेरिवेबल नहीं है। सॉल्यूशन, गिवन
fx equal to x minus 3, 2x minus 5, x less than 2, x greater than or equal to 2. At x equal to 2, left hand derivative of the function, limit x tends to 2 to the power minus fx minus f2 upon x minus 2 equal to limit x tends to 2, fx x tends to 2, it is a left hand derivative, so therefore x less than 2. In case of x less than 2, the value of function x minus 3, x minus 3 minus f2 equal to f2. So if x equal to 2, the value of function fx equal to 2x minus 5. So f2 equal to 2 into 2 minus 5 upon x minus 2, okay, equal to limit x tends to 2, x minus 3, 2 to the 4 minus 5 minus 1 plus 1 upon x minus 2, or limit x tends to 2 to the power minus x minus 2 upon x minus 2 equal to 1. It is a left hand derivative. Similarly, we can find right hand derivative equal to limit x tends to 2 to the power plus fx minus f2 upon x minus 2 equal to limit x tends to 2 to the power plus. In this case, students, fx equal to x greater than 2, x greater than 2, fx equal to 2x minus 5, okay, minus f2 equal to, so if x equal to 2, fx equal to 2x minus 2, f2 equal to 2 into 2 minus 5 upon x minus 2, or limit x tends to 2, 2x minus 5 plus 1 upon x minus 2, or limit x tends to 2, 2x minus 4 upon x minus 2 equal to limit x tends to 2 to the power plus 2 common, x minus 2 upon x minus 2 cancel equal to 2. It is a right hand derivative. Students, यहाँ आप देखो left hand derivative not equal to right hand derivative, left hand derivative not equal to right hand derivative, okay, ये आपका इक्वल नहीं है, तो therefore f is not derivable at x equal to 2. तो ये क्वेश्चन x पे क्या है, डिफरेंशिएबल नहीं है, और ये इस क्यों, क्योंकि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 1 है और राइट हैंड डेरिवेटिव क्या है, 2 है, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, सो दैट द फंक्शन fx is equal to x mod x is continuous at x equal to 0 is differentiable at x is equal to 0. हमें इस क्वेश्चन में गिवन फंक्शन के कंटिन्यूटी को चेक करना है x equal to 0, और ये भी चेक करना है कि क्या ये डिफरेंशिएबल है, ओके. सॉल्यूशन, गिवन फंक्शन स्टूडेंट्स fx equal to x mod x, okay, it can be written as minus x square if x less than 0, if x greater than or equal to 0, because mod x equal to minus x less than 0, x greater than or equal to 0. This is a multiplication of x mod x, so therefore multiplication of x minus x square and x square, okay. f0 equal to, if x is equal to 0, the value of function x square and 0, and left hand limit equal to limit x tends to 0 to the power minus fx,
ओके, इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 to the power minus x less than 0. In case of x less than 0, the value of function minus x square. Okay, here put the value of x, it will equal to 0. Left hand limit equal to 0. Now right hand limit, x tends to 0 to the power plus fx, limit x tends to 0, x greater than 0, so therefore value of function x square. Put the value of limit, it will be equal to 0. So here f0 equal to left hand limit equal to right hand limit, so therefore fx is continuous at point x equal to 0. तो ये तो कंटिन्यूअस फंक्शन हो गया. फॉर डिफरेंशियलिटी स्टूडेंट्स we will find left hand derivative and right hand derivative. So now left hand derivative, limit x tends to 0, fx minus f0 upon x minus 0. Here c equal to 0. Okay, equal to limit x tends to 0. Here the value of fx, x tends to 0 to the power minus the x less than 0. In case of less than, the value of function minus x square minus f0 equal to 0 upon x minus 0, equal to limit x tends to 0 minus x. Okay, equal to 0. And right hand derivative equal to limit x tends to 0 to the power plus fx minus f0 upon x minus 0. Limit x tends to 0 to the power plus fx equal to x greater than 0, x square minus f0 equal to 0, x minus 0, equal to limit x tends to 0, x equal to 0. Here left hand derivative equal to right hand derivative. Therefore function is fx is differentiable at x equal to 0. तो ये जो फंक्शन है आपका x इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूअस भी है और डिफरेंशिएबल है. और आप देखोगे कि केवल अगर मॉड x होता है तो फंक्शन ओनली कंटिन्यूअस होता है, नॉट डिफरेंशिएबल होता है एट पॉइंट x पे, राइट.